All right, everyone. Welcome back to New York session streams. All right. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Everyone is here, guys. Bhai, sir, I have brokerage job for trading, and I'm fully confident I will receive payout definitely now. I'm working in Royal Set Sunday. Other work blank backup for now. On around 12 to 13,000. That is amazing. It's great that you have started working out, you know, that will help you basically to have some income and then, invest that income basically in trading someday. And then you can make some money through that, right? Now, first of all, let's talk about the price action, okay? Pretty simple, pretty easy price action. What do we see? 4 hour candle open up, new 4 hour is just trying to break the previous candle high here. Previous candle closed as a doji. Okay, looking at the 1 hour, we are basically breaking above this previous structure here. So most likely we're gonna take out the what we call London high that we have here. That's what I recently see that can happen. So 15-minute new candle just open up. We can see some good volume where price can strongly move up to this levels. Okay, the recent levels I see where price can reject is this. Okay, but if we get a break of structure, most likely we can see trending to the upside and prepare for research analytic exam to get best job after that with work experience and say to sit. Okay, that is great plan. Like if you study basically, I as much as I know in terms of trading and all, I heard that having a CFA certificate and clearance of CFA that is way better. I don't know, you guys, you're talking about NISM, that is semi-registered certificate. That is also a good one. I think I met one guy in Shark Funded event who also have that, and yeah, basically it's good. Do you guys think like we should scalp here, like in order to move up? But yeah, if and London session trade was TP hit. Okay, guys, we hit the TP here, so congratulations to that. If you have not. Other than that, tell me what you guys are doing. What's the new in market? But I'm happy for Tiger FX by he's planning his things. I'm pretty sure 2026 will be his year where he succeed. Uh, Again, guys, like I have a question. If I plan some kind of a online meetup and things like that, should we plan that? Watching you, तेरे को बैंड ही करूंगा मैं. अब मैं तेरे को बैंड ही करूंगा. तो रुक, तू वापस आएगी ना, तेरे को मैं बैंड करूंगा. तुम लोगों को टाइमर में ही रखना चाहिए मेरे को क्या. मैं मीटिंग लेता हूँ ना कल. कल मिलेंगे तो मैं मीटिंग लेता हूँ ना मस्त.
All right. Basically, right now what I'm looking for is that London high is being taken out there. Okay. If London high is going to take out, most likely either we're gonna see some strong momentum first, then before moving down. But right now, I'm not looking for sells. I'm gonna wait before I, take any further trades here. But yeah, London we had a good trade, so I don't want to risk the things there. So we're gonna wait before for taking any further trades. Hmm. Why name XK trading floor? To be honest, I had from the start when I got interested into the trading part, I had a you can say a dream where I just wanted to build a trading floor where basically people can trade and together, you know. So that was the plan basically. इग्नोर ही करूंगा ना, तू फालतू बैठ के परेशान कर रही है तेरे को, क्या बोलूं मैं अभी. Sure, one day we're gonna build the trading floor. So looks like price just immediately rejected this levels after breaking the highs, you know. I would be more interested into a trade if we get a better entry here. The only thing is like the only concern point is this 4 hour, which could go bearish if we just. So this is a point where 4 hour can go bearish, to be honest. I think even right now for me, sells will be way more interesting from the top, but at the same time, I just need to wait. Sir, I have a plan to buy from 4909 and to go with the target of 150 pips, 200 pips, as well as we replacement 0.7. 40, and actually, to be honest with you, I'm not looking for buys, I'm looking for sells. We already got the break of structure here. I'm just waiting for some kind of a retracement in the zone. And if we get a rejection, I'm going to plan sells.
So what I'm planning basically is something like this to happen. I'm not planning any buys. The reason is we have just broke above this all highs. We are in this zone from London session, and now we are in New York session where I'm expecting some volume for price to move down instead of up. And also regarding the fundamentals are also not in favors of gold. So sells will be better instead of buys. I think 5 minute new 5 minute candle is pop up. If this give us a retracement back into the zone, would be good enough. Because you see below this zone 4 hour go bearish, and then we have kind of a strong volume coming in. So I'm thinking that if the price move up from here, then we can plan a sell from the top and give us a risk of how much. Yeah, we'll be risking around 160 pips. But for that, we just need to see if price do tap into these levels. 15 minute candle will be closing in around 3 minutes. So we'll review. I will wait for 3 minutes and see how price is closing. If you got a TP in London, why do you need to trade in NY, and are you willing to decrease your risk since we are in profit? Definitely yes. I'm willing to decrease my risk. Now, why I'm taking a trade in New York session? I have a simple rule that I can take a trade only once, okay, in one session if I have a win. Okay, so in London I have a win, I stop the trading. Okay, now in New York session I have no trade taken yet, so I can take one trade. Okay, but I cannot take more than that. Now in London, if I have one loss, then I can take another trade in the same session, but that will be the max trade I will take. Then I cannot take more than that. I just need to wait for New York session then. Let's wait 2 minutes because in 2 minutes we have a closure here. So to be honest, precisely I want to take an entry here, but the reason I'm not taking it is because we have a closure of 1 hour candle as well. So you see we are getting some rejections. Need to wait for the candle closure though. So let's do this, okay? We're gonna try to create a I don't know what is happening here. We got the doji closure there in the last 1 minute.
Right. So as I was saying, let's create a poll here. Okay. So we got the immediate bearish momentum. Let's take a look at the 15 minute. I want to take a trade, to be honest here. It did precisely tap into the zone. It's a new 1 hour, dating a bottom wick basically. If we get a better rejection from the top again, that would be a good entry for me. The only reason I'm waiting is because this could be, you know, problematic trade for me. It could eventually reverse with a similar volume, which we don't want. See, that's what I'm saying. The reason I did not enter yet is because there is a possibility we could see some momentum to the upside again, and I don't want to be a part of the trade that way. If your trading asset is only xauusd, yes, my trading asset is only xauusd because I have been trading this pair for last 3 to 4 years, and I don't want to shift to another pair. And I understand the volume when I trade this pair in sessions. Like for an example, right now you see that I did not enter into a sell as price did exactly what I wanted to do it, but at the same time I did not enter is because of this pullback that we are getting. I want to see, like, is it going to sustain that, because this is a 4 hour area where price, if it goes below this, then yeah. Yeah, looks now this candle is looking better. Let's enter short here. I'm in the sell. Okay, now this is, I have only entered my with my 50% rest. I'm gonna put, I want to put exactly like it here, but it could easily take it out because 1 hour doesn't have a wick right now. So I'm gonna give some room. Let me just show you the 1 hour. So you see 1 hour doesn't have a top rejection wick. It just opened up, created a wick and then moved down, right? We don't want that. We want price to create a proper wick zone, but let's wait for now.
So you see, price is pushing back down a little bit, but we have just a new 5 minute candle open up at the same time. To be honest, it does look way better if we do enter into a buys. But the kind of a volume we have right now, I have a, also like we have taken out this highs, then we have having this huge rejection that also tell me that we could possibly push down into this levels that we have because we were in this zone since London. So that's what I'm thinking. I'll share my chart with you in the Discord and let me check. Let me check where is Discord. We got it. But you can share chart in the group as well. There's no need to send me personally every time. Break of structure, change of character. Then we have FVG tapped. Then we have ODE zone. It looks good to me. This is a liquidity, like, looks good to me. But at the same time, this could be a really strong rejection. Like, it will be a really quick one. But at the same time, I have a feeling that it could also take out the lows. Let me review. This is on a 1 minute time frame, right? Yeah, it is on a 1 minute time frame. Let's see. It's on a 1 minute time frame. Let's review. Where is your? So you are targeting basically this, right? Yeah. So you have this. So basically, this is the area where you are entering for buys, and I'm looking for sells till this zone. To be honest, possibly, but again, like it will be a really minor reaction. I'm not sure that maybe your analysis can be correct, but at the same time, I'm looking for sells. To be honest. All right, guys. So I have put a poll into the chat. Okay, if most of the guys do agree with it, we're gonna do it. We got 3 votes till now, and everyone is saying yes. Before opening a position, have you plans? So my full risk is around 1 lot, and I know the percentage of a risk that I'm risking. Okay, so don't worry about it. That's what I will say. She's catching the falling knife. Who's catching the falling knife? Are you talking about me or are you talking about someone else? If you're talking about someone else, then don't know. To be honest, the way price is moving right now, I don't like it, to be honest. It shouldn't be doing this. You see, it consolidated for a while. It's now breaking the structure. So I'm gonna, put my SL here if we, because I don't want to risk more.
And the way price is moving, possibly if we break above this again, then we can move back up. Okay. So I'm going to put my SL there. And guys, I would suggest the same thing you do. Ah, okay. You're talking to Karnak? Yeah, we are catching the falling knife. That is right. We have a same kind of a trade setup that we had in London. Basically, we did catch the falling knife here, so possibly we can do the same thing here. Okay, we got till now another people voted saying yes. So if you guys are interested into the sessions, do one thing, join the Discord group where I'm gonna send the details in upcoming days. Okay, so join there. The thing is, like, I want to do session with at least 50 people there so we can have fun, basically. So let's see if we can get 50 people there joining, and then we can work on the sessions. So in 3 minutes we have 15-minute candle closure. Okay, and also in 3 minutes we have, actually, you know what, we have in 15 minutes we have NYSE opening, right? That would be pretty interesting. That would be interesting. If NYSE open and we just see a drop, that would be great. But if we see a pull back to the upside, then what? I'm checking this way. Okay, so basically this was the SL thing, took out that, and now we are pushing down. So I don't have any Instagram, bro. If I had, uh, I had Instagram, but they banned the whole thing. I don't know, suspended the Instagram accounts. Okay, we have only around 2 minutes. 2 minutes before the new 15-minute candle do start. I'm kind of excited to see what price gonna do. If we get the break of structure below that in around 2 minutes, that would be pretty amazing. Now we just need to wait a minute to wait for the candle closure. Also keep in mind, if we close like below the lows on the 15-minute, that would be way better. We are respecting the previous candle lows, but if not, then we are in trouble, because then we have this candle closure like this. Next candle could easily possibly, retrace back up, which we don't want, to be honest. Let's wait. 13 seconds. There we go. We got the candle closure. So this candle did close not respecting the previous low. Now that is
That is not good. But let's wait. Did you take bias from the daily candle? Yes, that is right. Daily candle was bullish since opening of Asia. And looking at the current price action, we are consolidating. We just grabbed some liquidity, and I'm thinking that once we have a minor change of character on a smaller time frame that we already did, then I feel like on a 5 minute and 15 minute structure shift would be the pretty amazing to fall till the zones. So let's see. We are getting some good momentum, but at the same time, we need a strong momentum. Like a sharp drop. Also, when I say close partials, please do close partials. Okay. My suggestion. Okay, let's see. My suggestion. We're gonna close partials here. Okay. Let's close the partials at this zone. How much is this? This is around 190 pips. So let's see what just happened. Yeah, okay. So London, we had a win. New York is already a win. Amazing. Close the partials, close 50%, done with the trade. And, let me also close my partials. Otherwise, I'm going to miss it out on my. See, that was pretty speed. I close my 50% there. Let the rest run. Okay. Let the rest run. Let's see how this goes because now we are 50% off the trade. Structure have been broken. If price do want to, again move up, it's fine totally for me. But let me see what I'm looking for here. Okay. I feel like that price gonna just push down into this zone. These are the levels that I target. So basically, I would target this much. It's too big of trade, but at the same time, that's why I have just closed partials there. है करो भाई आप hackers भाई hacker नहीं है it's just a simple price action bro, nothing more. Simple price action. Like I have not predicted something that is not happened yet. In the London we had the same thing. Okay, so if I can see, you guys can see that. Now this all the liquidity that we have generated would all be taken out sooner or later. I have just closed 50%. I'm gonna let the rest of the trade run and see how it turns out to be. Okay. The reason I'm gonna let it run is because I have a strong feeling that possibly it could just melt down a little bit. Again, in London we did not do anything. Asia we had a strong momentum to the upside. This is New York session. In around 15-minute closure, we have NYSE open, right? In around 10 minutes. So if NYSE volume is similar to the current volume, it doesn't do the opposite thing, then possibly we can see a strong momentum to the downside. Let's see. Yeah, the thing is कि like 15 मिनट के ऊपर टॉपिक नहीं है यार, ये टॉपिक बनाएगा आई थिंक. अगर इसने टॉपिक बनाया ना तो फिर मेरे को एसएल को रूम देना पड़ेगा, विच आई डोंट वांट टू, जेन्युइनली बोलूं तो. ठीक है, लेट इट
प्रिंट द स्ट्रक्चर, देखते हैं अभी क्या होता है। लेट मी ऑल्सो राइट इट डाउन, बिकॉज फिर लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे कि भाई ट्रेड तो चल रहा है करके। ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। तो 200 ही पिप का था राइट, ये हमारा टीपी हाफ वाला। हाँ 200 200। ट्रस्ट में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक ट्रेड खत्म नहीं हुआ है, मेरे को लग रहा है ये जाएगा। New 5 minute candle जो open हुआ, it just started immediately pushing down. Also not a good sign, but let's wait. Like always a candle जब open होता है ना, अगर वो टॉपिक बना लेता और रिजेक्ट कर देता है, मीनिंग देयर इज रियली लेस पॉसिबिलिटी फॉर प्राइस टू मूव अप। ये जो टॉपिक नहीं बनाती है जो कैंडल, वहां पे दो सिनेरियो हो जाते हैं। आइदर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि प्राइस को उसने चांस ही नहीं दिया ऊपर जाने को, ठीक है, एंड द सेकंड सिनेरियो इज के रिवर्स जाएगा। और मैं हमेशा सेकंड सिनेरियो सोच के चलता हूँ, बिकॉज जब ऐसी कैंडल रिवर्स जाती है ना भाई, मत पूछो क्या हालत होती है फिर। बहुत, मैं ऐसी ट्रेड में बहुत बार फंसा हूँ जहाँ पे इसके टॉपिक नहीं होती है और कैंडल फिर रिवर्स जाती है, बहुत ही जबरदस्त फंस जाता है ट्रेड में वो। इसलिए हमेशा लाइक ट्राई टू टेक अ ट्रेड जो जिसमें बॉटम एक टॉपिक हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंडिकेशन है कि रिजेक्शन मिल चुका है, समझ रहे हो। चलो लेट्स स्टार्ट अ Q&A। क्वेश्चन पूछो भाई तुम लोग, आस्क योर क्वेश्चंस। और भाई कौन था हु वाज टेकिंग द बाय ट्रेड हियर, इधर कौन बाय लेने वाला था, टाइगर राइट। और टाइगर भाई लिया बाय आपने लिया। सी भाई आपका एनालिसिस है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। ट्रस्ट मी दिस इज रियली गुड। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, एनालिसिस बहुत सही है, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू आर प्लानिंग इज प्राइस टू कम हियर एंड देन इट जस्ट टैप एंड मूव अप, राइट। बट मेरे अकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ अ सेटअप इज work only on based on 4 hour time frame, not on a 1 minute time frame. Try to check out the higher time frame instead of a 1 minute. अगर हायर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है ना तो check it out, because trust me this is a higher time frame setup. So इसलिए मेरे को लोअर टाइम फ्रेम पे इतना मोमेंटम मिलना इज गुड। अगर मैं 1 मिनट पे ही एनालिसिस करके मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा तो प्रॉब्लम है। अगर मैं 4 आवर पे या 30 मिनट पे एनालिसिस करके 1 मिनट पे ट्रेड लूंगा तो आई कैन गेट अ माइनर मोमेंटम, राइट। सो मेरा टारगेट ऐसा ही होता है मेनली। ओके, इन 23 seconds न्यू 5 मिनट कैंडल ओपन अप एट द सेम टाइम। 5 मिनट के बाद हमारा वो एनवाईसी स्टार्ट होगा। एनवाईसी विल बी इंटरेस्टिंग टुडे, बिकॉज मुझे देखना ये है कि प्राइस ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है पूरा, विल इट गना ब्रेक और नॉट। I'm more interested in break of the structure
बट ये जहाँ पे मैंने आपको 50% क्लोज करवाया ना, दैट इज अ गुड स्ट्रॉन्ग एरिया एज वेल। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव क्लोज 50% दैट। इसलिए मैंने टाइगर को भी जब उसने एनालिसिस सेंड किया ना, मैंने उसको बोला कि ये लो लेके फिर शायद ऊपर जा सकता है। ठीक है, बट लो लेके जो रिएक्शन मिलना था, दैट ऑलरेडी हैपेंड वंस एंड देन प्राइस इज टैपिंग दिस लेवल अगेन। तो अगर ये प्राइस वापस टैप करके फिर रिएक्शन देता है, ओके ठीक है, देन इट कुड पॉसिबली मूव मैक्स टिल दिस जोन। फिर वहां पे हमें हमें शायद वापस यू नो रिट्रेसमेंट मिले टू द लोअर साइड, बट लेट्स सी। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस भी बेसिकली ऊपर जाए इन अराउंड नेक्स्ट 5 मिनट एटलीस्ट। आई वॉन्ट कि यार ये जो उसने लो बनाया ना इतना स्ट्रांगली, एटलीस्ट उसका 50% क्लोजर दे, तभी जाके वी कैन एक्सपेक्ट कि वो कंटिन्यूशन लेगा। भाई किसी ने तो नो वोट किया है जिसको सेशन ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है भाई, इट्स फाइन। हम लोग तो ऐसे ही फ्री में ही सेशन कर रहे थे, इट वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ अ पेड सेशन। ठीक है, इट वॉज टोटली फ्री सेशन, जस्ट वॉन्टेड टू meet new people and just do this. नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स है ना, आके सिर्फ बेचते हैं चीजें। तो जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि भाई ऐसा कोई पेड सेशन नहीं होगा, इट इज टोटली अ फ्री सेशन वेयर वी जस्ट डिस्कस थिंग्स, दैट्स इट। Also in 3 minutes we have 30-minute candle closure too, so eventually देखने जाएं अगर 30 मिनट भी अगर क्लोजर देता है ना, बैरिश भी देता है एटलीस्ट, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये टॉपिक बनाएगा एंड देन इट कुड पॉसिबली मूव डाउन। लेट्स से वी हैव सम टाइम स्टिल। 3 मिनट है, लेट्स वेट आई गेस। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते इस सेशन में। जो हम लोग को ट्रेड लेना था, क्लोज करना था, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 2 मिनट है और फॉर द 30 मिनट कैंडल क्लोजर। लेट्स सी। मेरे को देखना है एनवाईसी में वॉल्यूम कैसा आएगा, दैट्स इट। एनवाईसी का वॉल्यूम जो आता है ना भाई, हर बार जबरदस्त होता है। तो 1 मिनट के बाद यू विल नो कि प्राइस का क्या होने वाला है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेल साइड पे वॉल्यूम आए, जो स्ट्रक्चर जिस तरह से है, लाइक ज्यादा से ज्यादा हम ये जोन में टैप करें। ठीक है, यहाँ से जोन में टैप होने के बाद अपोजिट वॉल्यूम दे, बट अगेन वी नीड टू वेट। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और जिस तरह से 15 मिनट क्लोजर दे रहा है, उस तरह से तो लग रहा है कि भाई रिजेक्शन ले रहा है ये। आई एम स्टिल मोर इंटरेस्टेड इन सेल साइड की, लेट्स से। ओके, बुलिश फ्लिप कर चुकी है कैंडल। नाउ देयर वी गो।
जिस तरह का वॉल्यूम है ना भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइस तो जबरदस्त। 1 आवर देखते हैं एक बार। 1 आवर मेरे को लगता है 1 आवर अगर बुलिश गए यहाँ से, तो पूरा पूरा बेसिकली प्राइस हाई ब्रेक करके स्ट्रांगली मूव ऊपर की साइड लेगा। पर उसके लिए हाई ब्रेक करना जरूरी है। अगर 1 आवर हाई ब्रेक नहीं करता देन वी आर गुड। ओवरऑल हम लोग ने 50% तो ऑलरेडी क्लोज किया है। 50% आई कैन रिस्क बिकॉज हमारा लंदन वी हैड ए गुड ट्रेड, तो व्हाई नॉट। ठीक है। 50% प्रॉफिट मेरा नहीं, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। I'm expecting कि even if it's right now break this lows again, we can still see a price pushing down to these lows. Okay, so let's see if we can get that. There we go. Nearly लो ब्रेक करने वाला था बट लो ब्रेक तो नहीं किया उसने स्टिल। लेट्स वेट अराउंड some seconds. All right. So price is going to looks like going to break the 30-minute low. 30-minute low break करने के बाद if it's still going bearish then समझ लो कि we're gonna break the lows this we have. ठीक है। We just need to wait and see कि 30 minute and 15 minute full price कैसे react कर रहा है। But now also keep in mind ये जो हमारा trade है ना, let's put it at a break even point. Okay, don't risk much. मैं basically ऐसे मेरा इसके इस कैंडल के above रख रहा हूँ। ठीक है। ओवरऑल मेरा टीपी इज दिस। ओके, नॉट गोना टारगेट द होल थिंग। इवन इफ आई गेट दिस मच आई एम फाइन। इवेंचुअली तो मेरे को लग रहा है ये जोन टैप करेगा बट स्टिल आई एम क्लोजिंग द होल थिंग हियर एंड लेट्स सी। ओके, 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ है या नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं हुआ। ये 30 मिनट का लो ब्रेक हो जाना एक बार सिर्फ, देन आई वांट टू सी के प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है।
Now it's going to do it. 30-minute low has been broken. Price. Okay. Okay. Now I feel like अगर ये low break करके rejection ले रहा है, possibly now we can see some push to the upside. Okay. Initially, but again, मैं तो भाई overall यही target लेके बैठा हूँ. I'm not gonna target the lows that we have. Actually, NY session में we did get some volume, but जितना चाहिए था उतना वॉल्यूम नहीं आया. टू बी ऑनेस्ट, आई वाज होपिंग कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, या तो ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड. यू नो, उतना स्ट्रांगली ब्रेक तो नहीं मिला है. लाइक इट्स नॉर्मल. तो लेट्स सी, जब तक आई थिंक ये 15 मिनट या 30 मिनट कैंडल क्लोजर नहीं होता तब तक वी कैन नॉट सी कि वेयर प्राइस विल बी हेडिंग नेक्स्ट. ठीक है, बट इवेंचुअली देखने जाए तो लाइक जो इसका रिएक्शन था दैट इज डन आई गेस हियर. अगर अब जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज टू द अपसाइड. मतलब अब प्राइस कैसा प्रिंट हो रहा है बताए. ये जो हाई है कंसोलिडेट हुआ, made a new low, made a high, again a new low, made a high, again possibly a new low, something like this we can see. But हाँ, मैं तो भाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस टू ड्रॉप from this level to this level and continue. Okay, let's do journaling. Okay, in the meantime let's do journaling, क्योंकि हम लोग ने फैब के कोई भी ट्रेड जर्नल ही नहीं किया भाई. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. जो आपको मैंने क्लोज करवाया था इधर ये ट्रेड, ठीक है, उसको पहले मैं डिलीट करता हूँ. आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन. वी कैन स्टार्ट सम फ्रेश. So this was the second fab जहाँ से हम लोग ने ट्रेड लेने स्टार्ट किए थे, राइट. So I'm gonna go to 1 minute time frame. ठीक है, 1 minute टाइम फ्रेम. पहले तो मैं बता दूं कि लाइक दिस इज अ फुल टीपी ट्रेड. ओके, हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिया था. सो दिस वाज इन लंदन सेशन. सो ट्रेड लंदन session. This was in London session. 0 to fab. Okay. Trade 1 gold sell. TP is around 250 pips. SL was around similar, around 210.
I think it was above this level, right? Which was 210. Okay, then first trade is journal. This was the first. Second was this trade. So this trade, I think we took with I think this day we were live with Saket, I guess, right? Also, gold we are going at break even, guys. So let's just journal this. This was in NY session. Okay, 02 Feb. Sorry, trade 2 of the day, and this was buy gold. Okay, we had a nearly 400 pips, 210 was SL. TP 400 pips, SL 210 pips, TP. Right, okay. So this trade is also journal. Okay, then we had any other further trades. थर्ड को भी हम लोग ने आई गेस न्यूयॉर्क में लिया, लंदन में लिया ना, फिर हाँ ये रहा, दिस ट्रेड भी टुक. इसको तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिकॉर्ड करता है, बेटर दिख रहा है ये. मैं ये पूरा ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं इतना ही रिकॉर्ड करता हूँ बिकॉज so I can see this is on 03 Feb London session, gold sell. TP was how much here? 300. 300 pips. SL is around 100 pips. TP quit. Okay, then we have this trade. 50% is running, 50% is closed. Okay, then we have 03 Feb 2026 NY session. Gold sell. TP is around how much? 480 pips. 480 pips. So yeah, as I was saying, 480 pip का हमारे ठीक है इस पे, right? SL was around 160. %50 closed at 200 pips. Rest is running. Okay, trade journaling is done. Buy up futures, prop में try करो ना, analysis is good.
एक्चुअली फ्यूचर एंड परफॉर्म भी ट्राई करना है मेरे को। लेट्स सी, थोड़े टाइम के बाद देखेंगे उसमें भी कुछ। ओके, जिसके फ्यूचर एंड परफॉर्म है ना, मतलब थोड़ा सीखने वाली चीज़ है क्या, बट डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई इट आउट। सो इन अराउंड 15 minutes वी हैव 1 hour क्लोजर। तो लेट्स सी 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट मैक्स वी गोना स्टे लाइव एंड देन वी गोना गेट ऑफ द स्ट्रीम। ओके, लाइक जिस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर प्रिंट कर रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग यार नीचे तो जाना चाहिए। हाँ, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉफर्म के अकॉर्डिंग बहुत सही है भाई। प्रॉफर्म के अकॉर्डिंग है ना, बहुत सही है। लोगों ने क्या पे आउट्स लिए प्रॉफर्म से, मिलियन मिलियन डॉलर के पे आउट्स लिए। पंद्रह मिनट में जिस तरह से प्राइस एक्शन मूव करा है, 15 मिनट में विल नो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल बी देयर। क्योंकि अगर प्राइस ने ये लो ब्रेक्स किए ना, देन तो मेरे को दिख रहा है कि प्राइस पॉसिबली ये लेवल टैप कर सकता है। बट उसके लिए 15 मिनट 1 आवर क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी कैसे क्लोज हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी डोंट वांट कि लास्ट 15 मिनट में बुलिश क्लोजर आए, दैट्स इट। ओके, एक बार ये हाई ब्रेक हो गया मतलब समझ लो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा तब तक भी रहना माइनर डाउन ट्रेंड। ओके, सेटअप टूर करवाता हूँ भाई। नहीं, इतना कुछ खास नहीं है सेटअप भाई, जो है आपको कैमरा में ही दिख रहा है सर, बाकी तो सब पड़ा हुआ है ऐसे ही। मेनली जो है आपको दिख रहा है वही है। बट ठीक है, देन विल मेक अ वीडियो ऑन सेटअप। कैमरा में तो आप दिख रहे हो। हाँ मतलब नॉर्मली उतना ही कुछ है, जस्ट पीछे एक फ्रेम है, दैट्स इट। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस। ओके, दैट मेरे को लग रहा है ना, ये कैंडल अब ये थोड़ा है ना खींचेगा ट्रेड, बिकॉज आई वांट लाइक कि कंटिन्यूअसली मस्त सीधा एक ड्रॉप ले ले। ड्रॉप तो ले नहीं रहा, इवन आफ्टर एनवाईसी। न्यूज है नहीं कोई आज।
looking at this price action 15 मिनट जिस तरह की कैंडल बनी हुई है अभी, इट्स डैम इंटरेस्टिंग कि एक बार उसने प्रीवियस 15 हाई का हाई ब्रेक कर दिया तो पॉसिबली कि हम लोग स्ट्रांगली पुश ले ले टू द अपसाइड। जब तक वो हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, बेसिकली वी कैन स्टिल ब्रेक बिलो दिस एरिया एंड देन ब्रेक द 15 मिनट कैंडल लो एंड स्टिल पुश डाउन, ठीक है। बिकॉज 1 आवर का क्लोजर है ना, वी आर गेटिंग इन अराउंड 9 मिनट्स, तो मैक्स वी आई एम गोना वेट इज अराउंड 9 मिनट्स। मेरे को चाहिए कि 1 आवर का क्लोजर अगर बैरिश होगा ना स्ट्रॉन्ग, तभी तभी पॉसिबली नेक्स्ट कैंडल लो बनाएगा, समझ रहे हो। अगर इसने डोजी कैंडल क्लोजर दिया तो समझ लो कि ये एरिया में टैप होने के चांसेस है टू द अपसाइड, एंड मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बाय साइड एट द मोमेंट। मेरा जो ट्रेड था विच इज देयर, प्राइस ले तो रहा है, खींच तो रहा है। लास्ट 8 मिनट्स में मेरे को लग रहा है ये बुलिश जाएगा। जिस तरह की कैंडल्स बन रही है ना, कांस्टेंट बुलिश, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे देना, सब वॉल्यूम ही डिफरेंट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। What do you mean? Explain, like which method? I don't get your question. थोड़ा डिटेल में बताओ भाई, which what kind of a method you are talking about this? I don't know. I have never heard about CDM method. क्या होता है ये? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग यार। तो अगर तुम फीचर से पे आउट लेके क्या बोलते हैं क्रिप्टो में, एंड देन फिर तुम कैश करो तो उसमें क्या ही इशू होगा। उसकी बात करो, देन देयर इज नो इशू भाई। आई गेस दैट व्हेन यू डिपॉजिट कैश इनटू योर बैंक, दैट CA will handle the whole thing then. You don't need to do anything. You just need to have a proper good CA, that's it. There we go। भाई सीधा सिर्फ टैप करके आया है, बच गए। मतलब इतना क्लोजली एसएल हिट होने को था 50% का, बट नहीं हुआ। तो भाई मेरा क्या है कि कल डेली बायस बायस चेक करता हूँ, मिडनाइट ओपनिंग के ऊपर है। देन टारगेट स्टैंडर्ड द डिविएशन वेरिएशन टू टाइप प्रेफरेंसेस पे। आई डोंट गेट इट। आपका क्वेश्चन क्या है भाई? व्हाट डू यू मीन लाइक standard deviation of Asian to only 24 currencies? मतलब you have a question or आप just बता रहे हो? What's the thing here? And payout receipt के लिए current account जरूरी है क्या? नहीं भाई, saving account is good. I have taken payout. मैंने क्रिप्टो में लिया था, then I have deposited the cash, but I have a saving account.
बैंक तो आई डोंट नो भाई, मैंने बैंक में डायरेक्ट पे आउट नहीं लिया भाई, टू बी ऑनेस्ट मैंने क्रिप्टो में लिया है। आई वोंट लाइक मैंने जो लिया है दैट इज डिफरेंट। ओनली टेलिंग, ओके भाई। So we got till now 7 votes, which is good. ठीक है भाई, तुम लोग जिन लोगों ने वोट किया है टू join the session, stick with us on the Discord group. We will update there. Okay. जब भी सेशन होगा ना वहां पे अपडेट आ जाएगा, सो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तीन मिनट है, 3 मिनट में भी लो क्यों? 3 मिनट में 1 आवर क्लोजर है ना, इसलिए इस तरह से डांस कर रहा है बैठ बैठ के। हाँ, 1 आवर का क्लोजर, राइट। मैं भूल ही गया था। 1 आवर क्लोजर अगर ऐसा रहेगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है। अगर इसमें लाइक लास्ट 2 मिनट में भाई क्रेजी क्लोज दिया है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये लास्ट मिनट में इतना गिर गया तो फिर 1 आवर स्ट्रॉन्ग बैरिश क्लोजर देगा। वी हैव अराउंड 1 minute and 40 seconds. Let's see how this candle closure is done. मेरे को चाहिए कि कैंडल बैरिश क्लोज दे, दैट्स इट, इन बिटवीन दिस जोन। जब तक ये जोन के पास क्लोजर मिलता है ना, वी आर गुड। ओके। नो भाई, आई हैव अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, इसलिए आई एम ट्रेडिंग दिस कामली। बाकी अगर पूरा डिपेंडेंट होता ना ट्रेडिंग पे तो इट वुड बी टफ फॉर मी, क्योंकि आई डोंट हैव दैट बिग ऑफ अ कैपिटल एंड आई कैन नॉट ओनली हैव इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, बिकॉज मेरे पास, मेरे अगर प्रॉपर एक्सपेंस को सपोर्ट करना तो आई शुड हैव अ बिगर कैपिटल इंस्टेड ऑफ द व्हाट आई हैव राइट नाउ, सो आई हैव अदर इनकम सोर्स। Okay, 1 hour will be closing in around 20 seconds. I'm expecting some strong volume after the candle close, to be honest, precisely to the downside, but let's see. अगर इसने वॉल्यूम टू ऑपोजिट साइड पे दिया है ना तो
कैंडल डिफरेंटली बिहेव करेगा। सी 1 आवर का टॉपिक बना के नीचे जाना फाइन, बिना टॉपिक बनाए नीचे जाना वॉज अ इशू। टॉपिक बना के अगर ये नीचे जा रहा है तो मजा आएगा। टॉपिक बना के वापस ऊपर आने का नहीं बोला, बट नहीं, आई थिंक अब ये ना सिर्फ अब प्राइस एक्शन जिस तरह से है ना, आई डोंट वांट टू ट्रेड दिस, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट। तो अब मैं प्राइस एक्शन नहीं देखूंगा बिकॉज दिस विल जस्ट बेसिकली, अब वॉल्यूम कहाँ चेक करते हो, ट्रेडिंग व्यू नहीं भाई, like I can see the volume in basically in the candles, mainly. There's no need for me to add a volume session to review the volume basically. But like अगर तुम enough time spend करोगे ना तो you will understand volume के कहाँ कहाँ आता है, right? जिस तरह से अभी प्राइस मोमेंटम में है ना, इट इज कंफ्यूजिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जिस तरह से ऊपर भी विक दे रहा है नीचे भी विक दे रहा है, राइट, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बाय और सेल साइड दोनों में फंसेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरे को प्राइस एक्शन नहीं देखना, क्योंकि ये अब अगर मैं और यहाँ पे रहूंगा ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है ये ट्रेड ले लेता हूँ वो ट्रेड ले लेता हूँ, बट इनिशियली मेरा जो ट्रेड सेटअप है विच इज ऑन अ सेल साइड, ठीक है। सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एकदम नीचे से आया, इट डिड गिव अस अ स्ट्रॉन्ग बॉटम विक, अभी वापस ऊपर खींच रहा है। तुम यहाँ पे क्या ही प्रिडिक्ट करोगे, समझ रहे हो? तो ये जो वॉल्यूम है ना, दिस इज नॉट गुड इवेंचुअली। हाई टाइम फ्रेम के बेसिस पे बहुत क्लियर है स्ट्रक्चर, बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम इट्स गेटिंग वे मोर कंफ्यूजिंग नाउ, क्योंकि again structure and volume is not aligning with the setup that we have, so I'm not gonna review it any longer. It's just gonna mess up my mind and help me to trade more and over trading and all. So I'm gonna get off the stream. So thank you so much everyone. And by जिन लोगों ने तुम लोगों ने वोट किया, join the Discord and we're gonna do the sessions there. Thank you so much for the uh, support, I guess. And I'm gonna see you in tomorrow live session, okay? And also we're gonna do the session, okay? The Zoom session. Thank you so much everyone for joining the live stream.